Okay, so hello everyone, I'm Sudipta Ma'am, welcoming you all to Vedang Classes powered by Vedang Institute of Technology. So tell me, how are you everyone? केमिति सब अच्छा? All okay? तमानकर preparation केमिति कौन चली छ मते टिके कहि दियो. Everything is good. समस्तଙ୍କୁ very very good evening. जय जगन्नाथ. ओडिया backpack. Very good evening. Very good evening to all. ओके टिके जल्दी जल्दी कनेक्ट हे सा. नो मैम गायत्री कौन हे गला तो काली रा आंसर भारी भयानक आंसर समस्त देइथिलो कि जणे पर्सन जाको मु कहि परिबिनी कि हां ठीकली आंसर देइछो तमान को आंसर देव केमति कहिथिली मैं ओसी गोटे गोटे चेक करबी को माने सी रे कोन ऑप्शन अछि सेला राइट टीचर मु आंसर काढी के रखि देइछि एबीसीडी करि कि तो तमाने से आंसर एनीवे सेटा को हमें लास्ट रे क्लास एंड रे मु आज पांचटा रखि छि सब दिन पांचटा देबी पांचटा डिस्कस करिबा ता सहित प्रीवियस क्लास रे जो माने आंसर देचंदी सेटा को डिक्लेयर करी ओके अच्छा डिटेक्टर डैडी ओके थैंक यू मिस्टर डिटेक्टर डैडी आसो तो फर्स्ट थिंग लेट न करी कि स्टार्ट करि देबा आज रो सेशन जेमति कि आपण माने जानि छंती टॉकिंग अबाउट ओके आसो सो 4000 दे कि आपण माने महापैक नहीं परिबे महापैक रो प्राइस रहउची 4000 जदि आपण माने एटी मो कोड यूज करछंती एसपीजी 10 ताहाले थोड़े 10% रो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपण माने पाई परिबे जे कोनोसी बैच आपण माने चाहउछंती परचेज करिवा लागि मो कोड एसपीजी 10 आपण माने यूज करिकि परचेज कले 10% डिस्काउंट मिलि छिबो एंड नेक्स्टली कहउची द वन एंड ओनली ऐप जोथरे आपण मानकू मंडे ऑनवर्ड्स मो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करिबी डिफरेंट माने चैप्टर वाइज जोटा कि रहउची बेद आईक्यू ऐप आपण माने जदि पर्यंत डाउनलोड करि नाहंती ताहाले स्कैन करिकि जल्दी डाउनलोड करि नियंतु एठु ही आपण माने डायरेक्ट स्कैन करिकि डाउनलोड करि पारिबे ओके समस्तिंका मेसेज देखिछि अरे अनेले तो मेसेज देखिबी काहिंती राका होछ आसो फास्ट क्वेश्चन आंसर मते टिके दे दियो कोन गुपचु फुपचु लिखलानी गायत्री आसो व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इज नोन एज द वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट hosting the point where Odisha's border extends further west फर्देस्ट वेस्ट को आपणकर जोटा कोन ना आपणकर एक्सटेंड करछ देहा कहला राइट आंसर कोन होबो की दोजी फास्ट आंसर टिके देखिबा मिस्टर दिव्यांश प्रसाद वेरी गुड इवनिंग एंड आसो मालकानगिरी देतेले राका माने मन इच्छा आंसर सो राइट आंसर देसंती लिसु मैडम श्री मैडम एंड ऑब्वियसली श्री मैडम देचंदी नुआपड़ा हां लिसु एंड श्री आर राइट जो माने ऑप्शन बी देचंदी जेरी आल्सो राइट जेरी गोटे सांगटे मत जेरी डाके सडन देखि कि भाबिली से आसी गला ओके देखो सो नुआपड़ा ओके राइट आंसर आपनकर कोन हे छिबो द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द आपन कोन कहि परिबा फर्देस्ट वेस्टर्न साइड आपनकर ओडिसा रे प्रोजेक्शन रहउची तार टोटल हमें कहि परिबा छत्तीसगढ़ पाखरे देकी नुआपड़ा जदि नुआपड़ा पढुचे ताहाले गोटे थर रिवीजन करतबा अबाउट द नुआपड़ा लेट्स हैव अ लुक हियर अच्छा कहला नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट आपनकर काहाठू सेपरेट हेची एंड केबे नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट रु ओरिजिन हेची माने सेपरेट हेची ऑन द ईयर एप्रिल 1 1993 रे ये सेपरेट हेची काहाटू ना काहाटू सेपरेट हेची छत्तीसगढ़ टू माड़ खाइबो कलाहांडी रो सेपरेट हेची ओके ताहाले कहले गोटे फेमस सेंचुरी आपनकर प्रेजेंट अछि नुआपड़ा रे तार ना कोन की कहि परिबो जे की बॉर्डर शेयर करूची कहा सहित ना बॉर्डर शेयर करूची छत्तीसगढ़ सहित सेही सेंचुरी जल्दी ताको हमें कोन कहूचे ना सुना बेड़ा सेंचुरी इज दैट क्लियर चित आपनकर छत्तीसगढ़ सहित कनेक्ट करूची हना नै मते कोंदु आउ गोटे कहूची गोटे वैली आपनकर सेठी प्रेजेंट अछि कोठी नुआपड़ा रे गोटे फेमस वैली प्रेजेंट अछि जोटा की गोटे आर्कियोलॉजिकल साइट डिस्कवर हेची एंड आपनकर छाडी दंतु सेटा तो हिस्ट्री कहिबी बट कोंदु को वैली एंड आपनको हिंट्स दे दोची जेते बेले आपनकर सरबपुरिया डायनास्टी को डायनास्टी को हमें रिलेट करोछे ए नुआपड़ा सहित माने वेस्टर्न साइड सहित ऑब्वियसली सरबपुरिया डायनास्टी रो आपण माने कहि परिबे कैपिटल की सर्व करथुला ना श्रीपुरा सर्व करूथला सरबपुरा डायनास्टी कैपिटल एंड सेटा आपनकर कोठी ना नुआपड़ा पाखरे प्रेजेंट अछि ओके क्लियर दैट इज द हिस्टोरिकल कैपिटल ऑफ द सरबपुरिया
एंड ता पाखरे आपनकर अछि दैट इज द मरागुडा वैली को वैली ना दैट इज नोन एज द मरागुडा वैली क्लियर इंपोर्टेंट वन रिलेट करेबो श्रीपुरा को रिलेट करेबो का सहित ना सरफुरिया का सहित आउ गोटे आपनकर प्री हिस्टोरिक साइट भी आपनकर नुआ पडारे अछि दैट इज नॉट दैट इंपोर्टेंट बट स्टिल भी आपन माने ना जानि था दैट इज योगी माया ओके दिस इज अ प्री हिस्टोरिक साइट आपनकर ओके कोठी प्रेजेंट अछि ना योगी डोंगर हिल आपनकर एटा नुआ पडा भीतर ही आपनकर अछि आ गोटे जिंस इंपोर्टेंट आपन माने जानि संती गोटे डैम प्रेजेंट अछि को डैम तार ना रहउची पटोरा डैम कहितली नुआ साडी माने कोन ना नुआ पाट हन नै तो नुआ पाट पिंदिबो कोठी ना पटोरा डैम रे नुआ पडा पटोरा डैम मते कोइ जो पटोरा डैम ता एक्चुअली आपनकर अछि ये को रिवर ऊपर आपनकर अछि क्विक को रिवर ऊपर आपनकर अछि पटोरा डैम आपनकर को रिवर ऊपर प्रेजेंट अछि ना प्योरली ऑन द जोंग रिवर ऊपर एंड जोंग आपनकर फर्दर जाई कि कहारा ना दिस इज द मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द महानदी जोंग रिवर ये सुपरमैन आसा को नदी ऊपर अछि ना जोंग नदी ऊपर अछि अगेन जोंग आपनकर कहारा ना महानदी रा ट्रिब्यूटरी नदी एते के जिंसा क्लियर आउ को डैम आपनकर सेठी अछि लोयर कोन ना इंदिरा डैम भी आपनकर अछि जोडा कि आपनकर कोन ना तिखाली डैम बोली हमें जानिछे एटा आपनकर कहा ऊपर ना इंदिरा डैम कोन ना इंदिरा रिवर ऊपर आपनकर अछि इंद्रावती रिवर ऊपर आपनकर तिखिला आपन सब बेले एग्जाम एटा पचारिबो हला सॉरी तिखिला नो तिखाली डैम हला एटा आपनकर कहा ऊपर अछि ना आपनकर सेम इंद्रावती रिवर ऊपर अछि एंड कोठी ना नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट अछि एटा भी आपनको एग्जाम रे पचारिबो सो दीस आर द इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपनकर नुआपड़ा ऊपर जदी क्वेश्चन आसिला या बाहरु आपनकर किछि आसीबो बाकी मालकानगिरी रो आमे जदी कहूचे मोटू विलेज होची द मोस्ट माने साउदर्न साइड रो एंड एंड विलेज बोली आमे कहूचे हैला ता पर भी क्वेश्चन आसीबो देखिबा आसो सो एठी रहला आपनकर नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा एंड होस्ट द पॉइंट वेयर द स्टेट्स बॉर्डर एक्सटेंड फॉर द वेस्ट इनटू द छत्तीसगढ़ माने एटा हला आपनकर ईस्ट साइड एटा वेस्ट साइड एटा होची नॉर्थ साइड एंड हियर इज द साउथ रे आपनकर एई कॉर्नर रे होची कोन ना मोटू विलेज तो एठी वेस्टर्न साइड रे आपनकर की रहउची ना आपनकर हियर इज द नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट क्लियर तो नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट रे आपनकर टोटल डायग्राम टा एठी मेंशन अछि जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को आस मते कहतु व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट ओके आंसर दे दियंतु हां बाबा मोटू मालकानगिरी रे कहली मु हां आस कहि छी व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नॉर्थ साउथ स्ट्रेट लाइन the distance of Odisha from its northernmost boundary in Mayurbhanj to its southernmost tip the Malkangiri ता माने कोन कहै छी ना नॉर्थ रु साउथ माने एठो आपण माने जे स्किप करूछंती ए डिस्टेंस ता आपनकर केते बोली पचारि छी को मते डिस्टेंस ता केते हबो 630 780 910 और 520 जल्दी आंसर दियो कोन कहउछो जल्दी आंसर दे दियो केते हबो नॉर्थ रु साउथ 780 किलोमीटर केतना ऑप्शन बी दे देछो ए केमती हबो सी केमती हबो सब मन इच्छा मानले हबो कि गणेश बाबू वेरी गुड इवनिंग बहुत दिन परे मो क्लास को आसिलो सो 780 किलोमीटर फ्रॉम दिस मयूरभंज टू मयूरभंज एठी रहला टिक एठू डाणी आनिबो पूरा मोटू जाय तो ये होची 780 किलोमीटर द मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन जियोग्राफिकल एक्सटेंशन जदि हमें देखुचे एटा भी मैक्सिमम the north and south connecting line and that is also the maximum length of the Odisha coast जदि हमें east to west देखुचे that is very narrowest and एटा आपनकर मिनिमम ही हबो so केते रहउची 780 km across Odisha okay next question आसा which of the following is the northernmost district of Odisha sharing borders with both Jharkhand and West Bengal northernmost district आपनको कहिची जे कि both आपनकर कोठी ना झारखंड सहित as well as West Bengal सहित शेयर करथुबो ताहाले जो सुंदरगढ़ ऑप्शन अछि आमे ताकू कोन कर परिबा ना इट बॉर्डर्स झारखंड एंड छत्तीसगढ़ but does not extend for enough माने ईस्ट एंड आपनकर वेस्ट बंगाल सहित टच करूनी तेनो एठी हमें कोन ना याकू झारखंड सहित रिलेट करेबा आउ ता सहित छत्तीसगढ़ सहित भी रिलेट करेबा किंतु एठी वेस्ट बंगाल कोन ना नाही आसो आउ कोन कहछि ना मयूरभंज कथा कहछि ताहाले आपु हमें रिलेट करि परिबा कि कारण एठी आपनको कोन कहछि ना वेस्ट बंगाल पाखरि माने नॉर्थर्न साइड ताहाले ऑब्वियसली नॉर्थर्न साइड रे मयूरभंज कहबा केउझर सहित हमर एटा आपन लैंडलॉक हे गला सुंदरगढ़ मयूरभंज सहित कनेक्टेड है कि केउझर अछि ओके एंड बालेश्वर कहला ये आपनकर वेस्ट बंगाल सहित बॉर्डर
शेयर करूची हन नाही कि झारखंड सहित ये हम करूनी तो रहिला वन एंड ओनली मयूरभंज देखि दियो आसो कोन कहूची ना मयूरभंज ही आपनकर रहूची हियर यू कैन गो विथ एपटे वेस्ट बंगाल एपटे आपनकर कोन होची ना झारखंड क्लियर क्लियर जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आसो मते कोंदु द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसो कहूची द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन को रीजन दे कि पास करी छी आपन को पचारि छी टॉपिक ऑफ कैंसर फॉलो हां कोटा दे कि आपन को पास करी छी पचारि जल्दी जल्दी आंसर दे दियो मते यार जल्दी जल्दी यार आंसर मते दे दियंतु डेफिनेटली आपन को कोन रहूची ओडिसा रे जदि हमें देखुचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्चुअली केते डिग्री जाउची एक्चुअली हम इट डजंट पास नो एनी ओडिसा डिस्ट्रिक्ट दे कि जाउ ओडिसा को टच करनी काहेकि कारण ओडिसा रे जदि हमें देखुचे एब्सोल्यूट नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट कारण जदि मैप रे हमें देखुचे हियर यू कैन गो विथ एठी हमर रहउची ओडिसा जोटे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एटा जदि हमर ओडिसा रो मैप हैला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जस्ट आइची ताल टोटल जदि नॉर्दर्न मोस्ट माने एई पॉइंट को जदि हमें मार्क करूचे ये आपनकर केते ना ये 22 डिग्री 34 मिनिट नॉर्थ ये आपनकर रहिबो 22 डिग्री 34 मिनिट नॉर्थ रे रहिबो किंतु ट्रॉपिक ऑफ कैंसर केते रे जाईची ना 23 डिग्री आपनकर सॉरी हां 23 डिग्री 5 मिनिट नॉर्थ 23 डिग्री 5 मिनिट नॉर्थ रे जाईची माने जस्ट हम कहि परिबा 1 डिग्री भी नुह तार डिफरेंस आपनकर एतिके रे कारण काहे कि नियरेस्ट आपनकर हमर नेबरिंग स्टेट जति कि आपनकर किए ना आपनकर छत्तीसगढ़ हैला हमर कोन वेस्ट बंगाल हैला इवन आपनकर झारखंड हैला एमान को टच करिस त माने हमर पाखा पाखी देकी जाईची इवन आ टिके गुंजी आसीतिले टच भी करि थांदा बट जेहेतु करिनी त टोटल जदि हमें कहूचे मन रखते क्वेश्चन को पुनः आसतु ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर केतेटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हेई परिबो ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर केतेटा कॉन्टिनेंट दे कि आपनकर जाईछि एटा से हम आपनको इंडिया मैप दिखेइली बट इंडिया तो पुनी वर्ल्ड मैप भीतर रहउछि तो जदि पचारला केतेटा कॉन्टिनेंट दे कि जाईछि छुआ जल्दी आंसर दे दियो केतेटा कॉन्टिनेंट्स दे कि ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ना तीनटा कॉन्टिनेंट्स दे कि जाईछि केतेटा वाटर बॉडीज केतेटा वाटर बॉडीज दे कि जाईछि छुआ जो जोडा लिखुछि सब गोटे गोटे क्वेश्चंस हैला ना 6टा वाटर बॉडीज दे कि मैम जाईछि जदि पचारछि केतेटा कंट्री एटी स्टेट कथा पचारुन जदि इंडियन स्टेट्स कहबो ताहाले आपण माने 8टा एज यूजुअल मारिबे कारण म एटी वर्ल्ड कथा पचारछि त माने कंट्री कथा केतेटा कंट्री 16टा कंट्रीज टोटल जदि आपण को पचारुछि ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर केतेटा कंट्रीज दे कि जाईछि ना 16टा कंट्रीज दे कि जाईछि आउट ऑफ इंडिया केतेटा स्टेट ना 8टा स्टेट दे केमति डिफरेंट डिफरेंट जो 16टा कंट्री सांको मानकर केतेटा स्टेट दे कि भी जाईथिबो निहाती ओके एंड आउ गुड इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि सब बेले पचारे ना को रिवर ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स कोन ना डिवाइड करिछि द माही रिवर इन द वेस्टर्न इंडिया इज द ओनली रिवर ग्लोबली हमें कहि परिबा जे कि कट करिछि माही आपनकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स तो माही रिवर को केही भूलिबे नाही जे कि ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एई जगह रे आपनकर कोन एई टाइप रे फ्लो है कि 2 टाइम्स हियर वन एंड हियर वन 2 टाइम्स आपनकर डिवाइड करिछि मन रहबो त मानकर एंड याकू हमें आउ कोन कहूची ना नॉर्दर्न क्लाइमेट साउदर्न क्लाइमेट रो डिवाइडर लाइन भाबरे कहूची ताहाले हमें ताकू क्लाइमेट डिवाइडर भाबरे कहि परिबा होना नै कोंतु समर सॉलिस्टिस सेतबे आपनकर आसी जाय it experiences the maximum solar tilt ता माने हमें कोन कहि परिबा ना लॉन्गेस्ट डे आपनकर इंडिया रे हमें कोटा को सेलिब्रेट करूछे एक्सपीरियंस करूछे एज ए लॉन्गेस्ट डे एवरी ईयर एनुअली काहाकू ना जून 21 को कीप इट इन योर माइंड कोन जून 21 को ताले बिकॉज़ ऑफ दिस टॉपिक ऑफ कैंसर वी आर एक्सपीरियंसिंग द लॉन्गेस्ट डे एवर इन आवर नेशन एतिकी जिंस इंपोर्टेंट आपनकर कोन ना टॉपिक ऑफ कैंसर विषय रे सब बेले एग्जाम रे पछारुछ जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को आई होप वी आर क्लियर okay including me asa next go how many districts of Odisha share a land border with the neighboring states of Andhra Pradesh asila कहला आंसर क्विकली कुआ yes yes जून 21 guys asa मते कोंतु केतेटा डिस्ट्रिक्ट हमरो आंध्र प्रदेश सहित शेयर करूची जल्दी जल्दी आंसर दे देला को डिस्ट्रिक्ट ताले कहि दबो 4 5 6 7 केतना आंसर दे दो तो 4 हबन रे छुआ आउ टिके आगु जाओ वेरी गुड मिस्टर पिकन कोन हबो ना 5टा कोन 5टा रहूची ना मालकानगिरी रहूची मालकानगिरी शॉर्टकट रे लिखि दोची रे छुआ फुल लिखला को टाइम वेस्ट हबो मालकानगिरी आउ कोन रहूची ना कोरापुट रहूची आउ कोन रहूची रायगड़ा रहूची एंड आपनकर कोन रहूची गंजाम एंड गजपति रहूची ये रहूची टोटल 5 districts of Odisha that those were
sharing their boundary with the Andhra Pradesh. अच्छा जदि आंध्र प्रदेश ऊपर को क्वेश्चन आसिला बार बार आपनकर जेहेतु हमर नेबरिंग स्टेट जो चारिटा रहुची ओके द आंध्र प्रदेश द वेस्ट बंगाल एंड आपनकर झारखंड एंड छत्तीसगढ़ बाय डिफॉल्ट तो ये चारिटा जाक विषय रे हमकु सब डेटा कलेक्ट करके रखिबा निहाती दरकार अच्छा जदि मते कहिलो आपनको गोटे क्वेश्चन पचारिला कि द मेजर कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स आपनकर साउदर्न साइड रो कोटा द साउदर्न माने साउथ ईस्टर्न इंडिया मेजर कोस्टल स्टेट जदि आपनको पचारिला ताहाले आपण माने आखि काना बंद करके कहा को मारी परिबे ना आंध्र प्रदेश को मारी परिबे कि से कहा सहित बॉर्डर शेयर करूची ओडिशा सहित आंध्र प्रदेश पर शेयर करूची बट आंध्र प्रदेश केतरा सहित ओडिशा सहित बाय डिफॉल्ट हमें जानि अछि छत्तीसगढ़ सहित अछि तेलंगाना सहित अछि कर्नाटक सहित अछि तमिलनाडु सहित अछि आउ गोटे कहा सहित अछि ना स्टेट नुआ बे ऑफ बंगाल सहित अछि तो टोटल 6 टा को आपण मान जेंती ओडिसा रा 4 टा मन रखि देले सेमिति आंध्र प्रदेश रा 6 टा को मन रखि देबे इंक्लूडिंग द बे ऑफ बंगाल एति दिन क्लियर एंड आपण को जो कोस्ट लाइन पचाची छ एटा वेरी इंपोर्टेंट कारण अपडेटेड कोस्ट लाइन जो आपनकर इंडिया रे हेइ 11000 समथिंग तापर आपनकर सब कोस्ट लाइन स्टेट गुडा कर आपनकर चेंज हो जाय ठीक अछि तो जदि हमें कहू जे ए आंध्र प्रदेश रा कोस्ट लाइन तोले अपडेट हेइ नथला ये टोटल गुजरात पर सेकंड पोजीशन रे थिला किंतु वर्तमान आफ्टर गुजरात सेकंड पोजीशन रे की अछि ना गुजरात आपनकर फर्स्ट पोजीशन रे छुआ अछि फर्स्ट पोजीशन रे कोस्टल लाइन अकॉर्डिंग सेकंड पोजीशन रे आपनकर तमिलनाडु अछि थर्ड रे आपनकर आंध्र प्रदेश अछि कोन ना कोस्टल लाइन अकॉर्डिंग ताहाले एठी कहियो आंध्र प्रदेश रा कोस्टल लेंथ आपनकर केते एक्जेक्टली इंपोर्टेंट रे सब बेले आपनकर सॉरी एग्जाम रे आपनकर ये बार बार पचारिबो प्रीवियसली जदी कहूची 974 किलोमीटर आपनकर थिला एज पर द प्रीवियस डाटा किंतु आंध्र प्रदेश एज ऑफ नाउ अपडेटेड कोस्टल लेंथ हमर जेमिति 574 हे जायछि ओडिसा रो सेमिति आपनकर आंध्र प्रदेश रा केते हे जायछि ना 1053 स्क्वायर किलोमीटर इज द कोस्टल लेंथ ऑफ आंध्र प्रदेश अमंग दैट आमे सब बेले कहूचे गुजरात रो केते अप्रोक्सीमेटली 1600 किलोमीटर किंतु सेटा पढि के आपनकर केते हे जायछि ना 2340 स्क्वायर किलोमीटर ताहाले तमिलनाडु आपनकर सेकंड पोजीशन केमदी आसी ना 1068 सहित 1068 स्क्वायर किलोमीटर सहित ताहाले एमिति करि करि जदि हमें टोटल जिबा ताहाले आंध्र प्रदेश पर की अछि कोन ओडिसा अछि कि बिल्कुल नहीं महाराष्ट्र अछि तापर ओडिसा अछि कि ना वेस्ट बंगाल अछि तापर ओडिसा अछि कि ना केरला अछि ओडिसा 574 अछि केरला 600 स्क्वायर किलोमीटर सहित अछि ओडिसा पर्यंत जदि टॉप 10 मन रखि पाछो दैट्स अ वेरी वेल एंड गुड जदि मन रखि पानो अप टू ओडिसा जाय समस्त मन रखिबे क्लियर एति कि जिंस अच्छा आ गोटे क्वेश्चन आपनकर आंध्र प्रदेश ऊपर मन पचारिबी जेमिति कि तमन को कहितली बिफोर इंडिपेंडेंस जदि पचारिला कि व्हिच इज द फर्स्ट स्टेट that has been separated or that has been created on the basis of linguistic that means language basis re separate state apanakar form is 1936 that is the pre independence period jodi after independence pacharuchi ko kiye habo na andhra pradesh habo but exact year and date mate kuntu andhra pradesh first कोन ना स्टेट फॉर्म हेची लैंग्वेज बेसिस रे आफ्टर इंडिपेंडेंस ताहाले को 1947 ने हेची और 1948 रे हेची देन गिव मी द एग्जैक्ट ईयर 1953 वेरी गुड दैट इज अक्टोबर 1 1953 रे हेची अक्टोबर 1 1953 रे हमर आंध्र प्रदेश आपनकर कोन हेची ना एज अ सेपरेट प्रोविंस लिंग्विस्टिक बेसिस रे हेची एंड गोटे जेमिति हमें कहूचे राइस बाउल ऑफ ओडिशा बरगड सेमिति राइस बाउल ऑफ इंडिया रा टाइटल कहा पाखर अछि छुआ राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा पाखर अछि ना हियर विथ द आंध्र प्रदेश पाखर अछि एटा भी इंपोर्टेंट आपण माने जानतु जदि मेजर रिवर हमें कहि परिबा इंडिया रा लार्जेस्ट पेनिनसुला रिवर हमें कोन कहूची ना गोदावरी को सो गोदावरी एंड कृष्णा एमाने आपनकर कोठी बिलोंग करूछंती ना फ्लो करिसंती टोटल आंध्र प्रदेश रे एंड बिकॉज़ ऑफ देम आंध्र प्रदेश इज नोन एज हैज बीन bear the name as a bear as the nickname of the rice bowl of India एटा मन रखंतु आ गोटे फेमस लेक आपनकर अछि आंध्र प्रदेश रे दैट इज द कोलेरू लेक समझ जानछन नै जोटा हमें कहूचे इंडिया रा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक काको कहूचे जेमिति ओडिसा रा लार्जेस्ट इंडिया रा लार्जेस्ट कोलेरू होबनी आंध्र प्रदेश रा लार्जेस्ट सॉरी इंडिया रा नाही इंडिया रा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आपनकर कोटा कहले दैट इज द उल्लार लेक आपनकर हेजिबो ओके तो हां कोलेरू एंड पुलिकेट आंध्र प्रदेश रा आपनकर हेजिबो आंध्र प्रदेश रा आपनकर रहिछि कुलेरू लेक ओके तो जो कुलेरू लेक रहउछि ये आपनकर कुलेरू लेक बोली हमें कहउछि
ओके एंड मन रखंतु ये इंडिया रो नाही ये आंध्र प्रदेश रो लार्जेस्ट जेमिति ओडिसा रो हमें अंशुपा मन रखिजे सेमिति हमर नेबरिंग स्टेट आंध्र प्रदेश रो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आपनकर होची कोलेरू लेक एटा मन रखंतु एंड ये डेजिग्नेट हेची ऑब्वियसली रामसर साइट रे आपनकर कृष्णा एंड गोदावरी मझा मझी आपनकर ये पडुची ओके पुलिकेट लेक भी आपनकर एठी प्रेजेंट अछि दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लागून आफ्टर द चिलिका जदि इंडिया रे हमें कहूचे फर्स्ट ब्रैकिश वाटर लागून देन कंसीडर्ड एज द फर्स्ट रामसर साइट आल्सो विथ द नेशनल केलाडियो नेशनल पार्क आपनकर राजस्थान सहित 1981 रे जाइथिला दैट इज द चिलिका चिलिका पर जदि सेकंड ब्रैकिश वाटर लागून पचारुची ताहाले मन रखन दैट इज द पुलिकैट एटा भी आपनकर कोठी ना एठी प्रेजेंट अछि क्लियर एति की जिंसा अच्छा आ गोटे आपनकर आंध्र प्रदेश विषय रे मते कहलो हाईएस्ट माउंटेन पीक क्लियर को मते द हाईएस्ट माउंटेन पीक आंध्र प्रदेश रो हां मते कोंदु हाँ ये जो कोलेरू लेक आपनकर आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु सहित मिक्स हेकी अछि माने 10 तमिलनाडु को ओनली 10% जाइछि बट मेजरली आपनकर आंध्र प्रदेश रे छाडी दियंतु मते कोंदु हाईएस्ट पीक ऑफ द आंध्र प्रदेश कोटा हबो राइट आंसर जल्दी 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 जिंदागढ़ आपनकर हेइसिबो पक्का यस अरक्कू वैली रे आपनकर प्रेजेंट अछि हाईएस्ट माउंटेन पीक नोन एज जिंदागढ़ ओके जिंदागढ़ and total eastern घाट ये होची हाईएस्ट माउंटेन पीक मन रखिबे समस्ते जदि पचारुची आंध्र प्रदेश एंटायर ईस्टर्न घाट रो हाईएस्ट माउंटेन पीक मध्य ये आ जो आपनकर श्रीहरि मने पड़नी श्रीहरिकोटा आपनकर कोन सती श्रीहरिकोटा कहूची सतीश धावन स्पेस सेंटर आपनकर अछि श्रीहरिकोटा ओके एटा आपनकर कोठी प्रेजेंट अछि ना नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश रे तेनु एसएसएस लिखि देले श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश आपण माने मन रखि परिबे एसएचएआर ओके सतीश धावन स्पेस सेंटर एंड आपनकर कोन श्रीहरिकोटा को रिलेट करी के मन रखि परिबे क्लासिकल डांस जदि एकथरा आंध्र प्रदेश रे पढुचे मन रखि दियंतु कुचिपुडी क्लासिकल डांस जदि आंध्र प्रदेश रे मन रखुचे ताहाले मन रखो कुचिपुडी होची तारा क्लासिकल डांस एंड आपन जो 8 रु 11th हे जाची क्लासिकल डांस तो एटा आपनकर कोन ना क्लासिकल डांस रे भी मध्य ऐड हेची एति की जिंसा मन रखि परिबो पक्का मन रखि परिबो हंदो जिबा आगु को एति की क्लियर आपन माने करो जदि शेयर बॉर्डर करूची साउदर्न सहित ताहाले आपन माने नेचुरली जानचंती कोन कोन ना ओडिसा सहित बॉर्डर शेयर करूची आंध्र प्रदेश तीनटा रिवर को भी मन रखंतु दैट इज द सिलेरू रिवर बंश अलगा हेची त बंशधरा एंड आपनकर नागाबली सिलेरू बंशधरा तीनटा जाक ओडिसा एंड आंध्र प्रदेश भीतर आपनकर कोन ना कनेक्टिंग करूची बट मेजरली लास्ट बॉर्डर होची बिटवीन द आंध्र प्रदेश एंड ओडिसा दैट इज द बंशधरा एति क्लियर या पर क्वेश्चन आसीबा हम आरो डिस्कस करिबा सो आई होप आंध्र प्रदेश भीतर एवरीथिंग इज क्लियर गाइस मु स्टेट वाइज जाइनी मानस मु स्टेट वाइज बिल्कुल जाइनी भी पर्यंत काई व्यस्त होचो आसो मते कोंतु हुई स्पेसिफिक रिवर फॉर्म्स ए नेचुरल पॉलिटिकल बाउंड्री बिटवीन ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश अलोंग द साउदर्न बॉर्डर ऑफ मालकानगिरी कोन हबा राइट आंसर जल्दी मते कहि दियंतु मु स्टेट वाइज जाइनी जस्ट बिकॉज़ ऑप्शन ने आसिला आई फील गुड टू शेयर ऑल द डेटास एज ऑफ आई नो ओके मानस देखो तो कौन कहि छी ना हुई स्पेसिफिक को स्पेसिफिक रिवर कथा एटी कहि छी जल्दी जल्दी आंसर दे दियंतु एटी कोन हबा आपनकर एग्जैक्टली सब वंशधरा मारु जो मु जानि सारी छी वंशधरा ओरिजिनेट हेची कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट रु कट थ्रू द रायगड़ा फॉर्मिंग द ईस्ट साइड एटी साउदर्न बॉर्डर कहि छी एठी आपण माने वंशधरा को मन रखंतु ईस्ट साइड सहित जीव ताहले माछकुंड सिलेरू रिवर सहित कनेक्ट करिवे माछकुंड सिलेरू रिवर known as the Sileru in its lower reaches form a natural political boundary between Malkangiri district and Odisha. Ilaru kono apanakara Sitharam Raju district सहित आंध्र प्रदेश रा साउदर्न पार्ट रे S for southern S for Sileru ओके apanakara ईस्टर्न साइड रे की अछि ना वंशधरा एति की जिंसा कंफ्यूज बिल्कुल हबो ना क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मते कोंदु ओडिशा इज प्लेस्ड इन व्हिच मैक्रो जियोग्राफिकल रीजन इन इंडिया ओडिशा आपनकर जो मैक्रो जियोग्राफिकल रीजन कहूची दैट मींस हमें कोन रिलेट करि परिबा ऑब्वियसली जदि हम इंडिया रा मैप को हमें देखिबा को साइड रे होची ना ईस्टर्न साइड रे होची त माने ईस्टर्न रीजन सहित गवर्नमेंट ऑफिशियली जो ग्रुप करिछि सब स्टेट्स माने को ओडिशा आपनकर कोठी रहउची ड्यू टू इट्स शेयर सोशियो इकोनॉमिक एंड द कोस्टल जियोग्राफिकल रीजन geographical with the West Bengal सहित and आपनकर बिहार सहित डेफिनेटली बे ऑफ बंगाल सहित मिसी के आपनकर ईस्टर्न रीजन रे ही रहउची सी ना ओडिशा आपनकर को पट रहउची ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ हियर इज द
Odisha is the west east side रे okay next mate कह दियो which district of Odisha shares an interstate border with Chhattisgarh to its west and is also the only district is that sector to touch three different internal administrative division internal administrative division कथा एठी आपन को कहिछि क्वेश्चन कोन कहिछि ना border and crossed district कथा पचारिछि किए मते कहि परिबा राइट आंसर कोन हे जिवो क्विक वेरी गुड कोन कल तमे मिश्र बाबू कोन कल एमती तमे आंसर दबो बोली मु एक्सपेक्ट भी करि नथिली तो राइट आंसर आपनकर कोन हे गला ना बरगढ़ तारे बरगढ़ आपनकर कहा सहित करिछि ना इट शेयर्स इट्स वेस्टर्न बाउंड्री विथ द छत्तीसगढ़ and link करूची मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कोन ना वेस्टर्न ओडिशा सहित नॉन अदर द ऑप्शंस आर राइट क्लियर देखि दियो बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट आपनकर रहउची हियर इज अ बरगढ़ ओके बरगढ़ सहित ताकू कनेक्ट करिवो को पटे रहउची आपनकर ना छत्तीसगढ़ सहित कनेक्ट होउची ता सहित मने रखंतु ये आपनकर कोन ना नॉर्दर्न डिवीजन सहित and western Odisha development council and the part of the central division सहित ये मध्ये कनेक्टेड क्लियर एतिकी जिंस वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन in terms of linear geographical distance what is the approximate east west width जेमिति त माने को नॉर्थ रु साउथ कहितली 780 किलोमीटर को समस्त चूज करथिलो ठीक सेमिति जदी ईस्ट टू वेस्ट को मु त माने कहितली ओडिसा रो width according to east to west division को ताहाले त माने कोन राइट आंसर मारिबो क्विकली कुह ताहाले कोन मारिबो गोटे मन रखिबो 780 गोटे मन रखिबो 550 हैला 780 550 एतिकी जिंस मन रखि परिबो नुआपड़ा रु मयूरभंज पर्यंत हम रिलेट करि परिबा कि ए जो रिप्रेजेंट करछि एक्यूरेट आपनकर फ्रॉम द कोटू ना नुआपड़ा एंड आपनकर को पटे पड़ रहइबो हां देखि दियो मयूरभंज यस देखो वेस्टर्न मोस्ट बॉर्डर द नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट रहइबो नियर 82 डिग्री एंड व्हाइल द ईस्टर्न मोस्ट बॉर्डर विथ द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट आपनकर रहइबो alongside the linear straight line distance 559 और approximately आपण माने 550 को भी नहीं परिबे यदि 560 थिबो नहीं परिबे 559 को मन रखंतु हैला 550 और 559 मन रख परिबे with the 550 किलोमीटर approximately clear next चलो मते कोन which is the only district in the northern side which is the only district in northern Odisha that forms an interstate tri-junction boundary with both Chhattisgarh and Jharkhand माने Odisha Chhattisgarh and Jharkhand क्लियर ओडिशा छत्तीसगढ़ एंड झारखंड सहित आपन को पचाची को डिस्ट्रिक्ट आपनकर शेयर करूची बाउंड्री इट्स माने कोन कहबे इट इज द यूनिकनेस ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट द नॉर्थ वेस्टर्न जियोमेट्रिकल डायरेक्टली कॉर्नर करची कोन ना बोथ झारखंड एंड द कोन छत्तीसगढ़ टू द वेस्ट माने की ना वन एंड ओनली सुंदरगढ़ केउझर सहित केमिता माने कर केउझर त प्योरली लैंडलॉक्ड रहिला आपनकर कोन वेस्ट साइड रे आपनकर कोन होची ना ईस्ट वेस्ट आपनकर हेकी होची मयूरभंज रहउची त आपन माने केमती कनेक्ट कर दोचंदी कनेक्ट केमती करछंदी ऑप्शन देखि कि जाउ ना सुंदरगढ़ इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्थ ओडिशा दैट फॉर्म्स एन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन बाउंड्री विथ द छत्तीसगढ़ अरे बडे वाला एपडू पळेली कोन एठी देखो हैला सुंदरगढ़ कोडेला सुंदरगढ़ हियर यू ना यस सुंदरगढ़ हैला छत्तीसगढ़ झारखंड एंड ऑब्वियसली आपनकर कोन ना ओडिशा रहिबो हैला तो तीनटा सहित आपनकर ए डिस्ट्रिक्ट रहउची मन इच्छा मार दोचो आसो टिके सेंस लगाओ हैला आसो व्हिच स्ट्रक्चरल हिल रेंज कोन कहै छी व्हिच स्ट्रक्चरल केनटा जेस के कोन कहउछ दिना बंधु औ देखो कोन बताची ना व्हिच स्ट्रक्चरल हिल रेंज ऑफ ईस्टर्न घाट इन ओडिशा is globally renowned among the geologists for hosting the ancient Khondalite and the Chanukite rock formation ताले को ancient hills सहित रिलेट करछि देखो देवमाली is the highest individual आमे कहि परिबा among all the mountain peaks present in Odisha but that focus over the elevation only एटी ancient कथा पचारिछि माने आमे कोन कहि परिबा ना प्रीवियस कथा पचारिछि ताहाले मन रखंतु अनुकूल ढेंकानाल बेल्ट रे आपनकर अछि खोंडालाइट हिल खोंडालाइट कथा कहिछि डेफिनेटली आपण माने आंसर को रिलेट करि पारथु जो जियोग्राफिकल जोन आपण माने रिलेट करि परिबे अनुकूल ढेंकानाल लाइन आपण माने पाइ परिबे दैट इज द ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड द जियोलॉजिकल मैक्रो स्ट्रक्चर फॉर द हिल रेंज दैट वेयर प्रेजेंट हैव द कोन ना खोंडालाइट एंड द चानोकाइट रॉक फॉर्मेशन होछि ओके नेक्स्ट चलो अधिक मेस को पसनी खाली मन रखंतु खोंडालाइट एंड चाकोनाइट कहला माने को रीजन को कहबा ना ईस्टर्न घाट ग्रैन्युलाइट बेल्ट को आपण माने सॉरी खोंडालाइट हिल नाही रे हां खोंडालाइट हिल ही आपनकर हबो ना ना खोंडालाइट हिल केमथि हबो त मानकर गोटे मिनिट खोंडालाइट हिल नाही सॉरी फॉर दैट
अनुगुल सहित नहीं एटा ईस्टर्न घाट ग्रानुलेट बेल्ट हबो कारण ईस्टर्न घाट त माने करो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस ईस्टर्न घाट बेल्ट आपनकर कोन होची ना द ऑफिशियल आपण माने कह पारे मैक्रो जियोलॉजिकल एंड जेते हमरा माउंटेन पीक फॉर्म हेची इवन देवमाली हला बाकी जेते ओल्डेस्ट रही कारण ईस्टर्न घाट फास्ट फॉर्म हेची तेनु ओल्डेस्ट वन आमे कहि परिबा द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन आपनकर हेची एंटायरली हाई ग्रेड आपनकर कोउटू ना ईस्टर्न घाट जोन रु हेची त खोंडालाइट हला एटा गोटे ओल्डेस्ट माउंटेन आपनकर फॉर्मेशन हेची रॉक फॉर्मेशन रु बाहर अछि तेणु आमे फास्ट की रिलेट करबा का सहित ना ओल्डेस्ट सहित बाकी रहला आपनकर जो खोंडालाइट हिल कहूची ताकू देखि कि मु कंफ्यूज हे गली सॉरी फॉर दैट इज द बेल्ट आपनकर रहउची कोन ना डिफरेंट रॉक्स आपनकर एठी पड़छि माने ओल्डेस्ट रॉक आपन माने एठी पाई परिबे बट एग्जैक्टली जदी गोटे प्लेट कथा कहूची ताहले आपन माने ईस्टर्न घाट सहित रिलेट करबे हैला सो ये ठीक अछि हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक्स पर्टिकुलरली एंशिएंट खोंडालाइट एंड द कोन ना चानोनाइट सहित हियर यू कैन गो विथ ओके नेक्स्ट चलो मते कोंतु द पंपोस खंडाधार ओके देखो एठी कोन अछि ना पंपोस वर्ड अछि पुनी खंडाधार सहित तुमको रिलेट करथिली का सहित ना सुंदरगढ़ एंड केउंझर सहित ऑप्शन वाइज जीवो एटे प्लेट्यू कहछि नोन फॉर इट्स रिच आयरन कहछि माने आखिकाना पॉज करके अपन माने कोठी मारिबे नॉर्दर्न प्लेट्यू सेंट्रल रिवर बेसिन साउदर्न वेस्टर्न हिली रीजन और सब कोस्टल प्लेन कोन मारि परिबे एठी मन जल्दी कोंदु जेते बेले पंपोस केउझर एक्चुअली हेबा कथा किंतु क्वेश्चन मु टिके चेंज करके देछि सो दैट अपन माने रिलेट करि परिबे खंडाधार प्लेट्यू कहछि माने ए जो केउझर आपनकर को साइड अछि नॉर्दर्न प्लेट्यू रे अछि ना नहीं नॉर्दर्न साउथ पुनी किए मानला रॉयल श्रीराम साउथ केमती हबरे छुआ नॉर्थ साइड रे केउझर प्रेजेंट अछि ना केउझर पंपोस एटा को कुहा जाय मने अछि ना पंपोस खंडाधार मु चेंज करके ताकू देछि पंपोस खंडाधार प्लेट्यू किंतु क्वेश्चन आसे अपन मानकर पंपोस केउझर प्लेट्यू तो केउझर को हमें नॉर्थन साइड से रिलेट करबा सेंट्रल को काहे जाउछ तो माने द मिनरल रिच छोटनागपुर प्लेट्यू रे माने होसोती गोटे पार्ट ना तो सेंट्रल रिवर बेसिन आपनकर हे गला माने आपण मानकर कोन हे जीवो ना महानदी ब्राह्मणी नदी ए मानकर रिवर बेल्ट रे आपनकर जोडा रहिबे मोस्टली हमें अलुवियल सॉइल से कनेक्ट कर परिबा हैला नेक्स्ट चलो तो हियर यू गो विथ द पंपोस खंडाधार आपनकर फेमस खंडाधार वाटरफॉल सहित कनेक्ट कराओ बोली कहली दैट इज प्रेजेंट इन आपनकर कोठी ना स्मॉलेस्ट वन इन द केउझर मते कोन नेक्स्ट क्वेश्चन ना देवमाली ओके क्वेश्चन ऊपर को जाओ क्वेश्चन डेप्थ को जाओ ठीक अछि पिला दउचंदी आ देवमाली द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ ओडिशा 1672 meters that we all know belongs to which specific sub range of the eastern ghat ro sub range अछि तो एग्जैक्टली देवमाली आपनकर कोन जेमिति ईस्टर्न घाट रो हाईएस्ट माउंटेन पीक हमें कहउचे कोन ना जिंदागढ़ हमें कहउचे कि आंध्र प्रदेश रे प्रेजेंट जदी एंटायरली ईस्टर्न घाट रो ओडिसा रे प्रेजेंट अछि एटा होची देवमाली ताको हमें हाईएस्ट माउंटेन पीक कहउचे बट जो सब रेंज ऑफ द देवमाली पीक ता माने हम कोन बुझिबा तो डिफरेंट रेंजेस अछि जेमिति पोटांगी रेंज अछि जेमिति चंद्रगिरी महेंद्रगिरी रेंज अछि महेंद्रगिरी कहउची माने कोठी गजपति ता माने गजपति डिस्ट्रिक्ट सहित पळेबो एठी पछाची देवमाली माने कोरापुट सहित हम रिलेट करिबा कोन कोरापुट सहित अपन माने कोड रिलेट करिवे डेफिनेटली पोटांगी रेंज को रिलेट करिवे केतला ऑप्शन ए दे देछ राइट आंसर पोटांगी देवमाली कोरापुट सहित जिवे वेरी गुड गाइस वेरी गुड आसो तो नयागढ़ भंजनगर ये आपनकर गंजाम सहित पळेला नयागढ़ सहित गंजाम ये आपनकर गंधमार्दन कहले कोठी रिलेट करिवो बलांगीर बरगड गंधमार्दन कहले आपण माने कोठी रिलेट करिवे लेखि दोची रिपीट हेइ जिवो बलांगीर बरगड नयागढ़ भंजनगर कहला माने को प्लेट को जिवारी गंजाम प्लेट को चंद्रगिरी महेंद्रगिरी ये कहले कोठी की गजपति को ताले टोटल हम जदी रिलेट करबा का सहित ईस्टर्न घाट सहित पोटांग रहिला ऑड एंड आउट करो जदी पोटांगी ना सुनी भी ना हो ताले एगुडा को आपण माने एलिमिनेट कर देले ऑटोमेटिकली आंसर पाइ जिवे हैला तेनु सब ऑप्शन विषय रे हमको डिटेल आईडिया रहबा दरकार नले हम एलिमिनेट केमति करबा हैला आसो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर मते दे दियो कहिची the coastal plains of Odisha are traditionally divided into various deltas which of the following region is geographically classified as the gift of six rivers एठी पछारिची माने हेक्सा डेल्टाइक रीजन ताहले को प्लेन ओडिसा त हमें जानि छे ओडिसा में आंसर जानि छे कि हेक्सा डेल्टाइक रीजन कहउची माने ओडिसा इज द होम टू द हेक्सा डेल्टाइक रीजन हेक्सा डेल्टाइक रिवर्स राइट बट रुसिकुला इज नॉट फॉर्मिंग एनी डेल्टा इनसाइड द बॉडी ओके तो राइट आंसर कोन कहउची ना नॉर्थर्न कोस्टल प्लेन को हम रिलेट करबा कि नॉर्थर्न कोस्टल प्लेन कहले आपनकर बुढ़ा बळंग अछि बुढ़ा बळंग कोन हेक्सा डेल्टाइक रीजन ना गोटे पार्ट की ता माने हम कोन ना मिडल कोस्टल प्लेन को रिलेट करे परिबा कोंतु ह ना नहीं वेरी गुड ताहले मिडल कोस्टल प्लेन आपनकर जेतिका सेंटर लैंड माने सेंट्रल ओडिसा रे रिवर माने अछंती तो समस्त आपनकर एथि ऐड हिजवे लाइक महानदी ब्राह्मणी बैतरणी सुवर्णरेखा बुढ़ा बळंग ऋषिकुल्या बुढ़ा बळंग इटसेल्फ आपनकर कोथिरा ना हेक्सा डेल्टाइक रो भी गोटे माने कोन पार्ट
ओके तमन को कंफ्यूज करबा लागि हम कहली बट से माने फ्लो होई कि आपनकर कोन ना मिडिल कोस्टल प्लेन पर्यंत आसी जाय क्लियर नेक्स्ट चलो मते कोन अगेन तो एठी आपनकर रहउची कोन छटा जाको रिवर को आपन माने कनेक्ट करि परिबे हाँ श्री मैडम हेला आसो नेक्स्ट क्वेश्चन मते को ना व्हिच इंटीरियर प्लेट्यू ऑफ ओडिशा लाइज specifically between the mountain ranges of the Eastern Ghat and the Chotnagpur extension acting as a structural transition zone drained by the Baitarani river कौन पचाची क्वेश्चन ना लेंथ को देखि कि बिल्कुल डरनी सिंपली बुझो द ट्रांजिशन जोन इंटीरियर प्लेट्यू कहा कथा पचारची जदि जयपुर प्लेट्यू कहूची these are located extremely south western corner of Odisha जयपुर ता आपनकर कोन ना very far away from the Baitarani river तो एठी पचारिछि कोन ना ओडिसा स्पेसिफिकली ईस्टर्न घाट छोटनागपुर एक्सटेंशन ता माने कोन आखि काना बंद करके एठी केउझर को रिलेट कर देबा केउझर पाम्पोस को हम रिलेट कर देबा छोटनागपुर ये होची गोटे कोन ना पार्ट सो दैट इज ड्रेन्ड बाय द बैतरणी रिवर हाईलैंड डायरेक्टली बेस हेची छोटनागपुर एक्सटेंशन हेची कोठी की ना हमर सेंट्रल ओडिसा को थ्रू कहारा ना केउझर प्लेट्यू पिडपा में केउझर पाम्पोस प्लेट्यू बोली छुआ कहूचे नवरंगपुर प्लेट्यू कहले जयपुर पाखरे that is the table land जे कि adjacently नवरंगपुर जयपुर पाखा पाखी अछंदी फुलबाणी कहली आपनकर लोकेटेड हाई अल्टीट्यूड रीजन माने कंधमाल दारिंगबाड़ी कश्मीर ऑफ ओडिशा तो ये फुलबाणी आपनकर कंधमाल पाखरे ये हमर सेंटर को आसी परिबनी तो सेंट्रल ले गोटिए रहिला कि केउझर केटी हेला नेक्स्ट चलो मते कहियो अगेन द गंधमार्दन हिल रेंज ओके द गंधमार्दन हिल रेंज फेमस फॉर इट्स मेडिसिनल प्लांट हमें जानि छे रामायण जुगरु पचारिछे हिस्टोरिक जियोग्राफिकल लैंडमार्क बिटवीन बलांगीर एंड बरगढ़ स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट व्हाट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म रिफॉर्म तो करूची क्वेश्चन आपन को इजी लागिवो देखिबा पय किंतु तले लैंड टाइप ऑफ पचार देला लैंडफॉर्म टाइप ऑफ द गंधमार्दन रेंज पचार देला एठी आपन माने कोन टिके बाउळे हिसिबे काहे कि काना ये तो गोटे वोल्केनिक डोम हुआ कारण ओडिसा रे आपनकर कोनोसी वोल्केनिक इरप्शंस नाही माने वोल्केनिक अपवेलिंग मैग्मा जोडा कमे कोन कहचे मैग्मा अपवेलिंग और द वोल्केनिक इरप्शंस आपनकर कोन काहिनी ता माने हम रिलेट कहा सहित करि परिबा डेफिनेटली दैट वुड बी योर रेसिडुअल कोन ना रेसिडुअल माउंटेन साथ रिलेट करिबा दैट इज वेरी हार्ड and obviously that is weather resistant plateau जे कि आपनकर कोन लेफ्ट ओवर हे जाईची आफ्टर millions of years surrounding atmospheric erosion फଳରେ ता माने relict or the residual mountain को हमें कहबा that is the गंधमार्दन सहित आपण माने रिलेट करे देबे ए जो relict लेखुची somehow it sounds कोन relief फरिका तो गंधमार्दन पर्वत रे एमिति जड़ी बूटी अछि जोडा आपण माने नेला फଳରେ रिलीफ फील करिवे रिलैक्स फील करिवे सो relict वर्ड टाको आपण माने अल्टीमेटली गंधमार्दन सहित रिलेट कर देबे रेसिडुअल को भी आपण माने गंधमार्दन आर फॉर relict आर फॉर रेसिडुअल क्लियर एति की जिंस क्लियर नेक्स्ट को जीवा आस मते कहि दियंतु अच्छा एठी आपनकर गंधमार्दन को टोटल स्टेज है कि एई जगह रे अछि हैला एई जगह रे आपनकर अछि हियर यू कैन सी ओके बलांगीर बरगढ़ पर्यंत स्टेज है ओके नेक्स्ट चलो मते कोंदु व्हिच यूनिक physiological feature of the Odisha coastal plain represents a massive that is the Pleistocene era landform composed of older alluvium often found slightly inland from the active delta question very easy बस तमन को एई भले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो छी कि क्वेश्चन जब एग्जाम रे पड़िला टोटल तमने खाबडेबा ता माने कोन कहै छी द कोन ना लेयोस्टोनिक एरा द ओल्डर alluvium फीचर ना कोन कहै छी ओल्डर alluvium कहै छी माने सब बेले तमन को कोन कहै छी गोटे जिंस माइंड रखियो तमने तराई रीजन जोटा कमे बंगा रीजन कहै छी कोन तराई the tarai or the banga equivalent local red loam patches को हमें कंसीडर करिबा की बिल्कुल भी हो मु जानि छी त माने को सी मार दे सब आनिबो the western laterite self कोन राइट आंसर मु जानि थिली मु सी मारी माने त माने समस्त डेई पडिबो मु जानि थिली बा बस एंती तो एंती ब्लाइंडली फॉलो करो नो मोर क्वेश्चंस नो मोर क्रॉस किछि नाही हैला हां आसा तो वेस्टर्न लैटेराइट सेल्फ को हमें काई कहबा ना ऑफिशियल फिजियोग्राफिक डेजिग्नेशन जते बेले आपनकर हेसी डिजाइन हेसी आपनकर एलिवेशंस हेसी सेते बेले आपनकर ओल्डर कोन लैटेराइट सेल्फ आपनकर इनर एज ऑफ ओडिसा प्लेन रे आपनकर कंसिस्ट करि जाईची दैट मींस जते बेले क्वेश्चन आपन को पचारिबो कोन ना लेयोस्टोनिक कोन लेयोस्टोसिन एरा दैट मींस द ओल्डेस्ट वन जे कि लैंडफॉर्म हैला पर रे ओडिसा रो अपर पार्ट रे रही जाईची ताको हमें कहउचे दैट इज द वेस्टर्न लैटेराइट सेल्फ सी द आंसर
Okay, the western laterite shelf is a geomorphological feature in Odisha composed of the Leistonic era, that is the lateritic uplands and older alluvium misiki. कौन ना lateritic uplands and older alluvium misiki आपनकर ए कलरटा फॉर्म हेजी and definitely ओडिसा रा किछि पोर्शन upper area रे आपनकर जेमिति छोटनागपुर plateau, that means northern part. तो northern part रा किछि area रे आपनकर ये delta form करके रहि जाइछि. एतिके जिंसा बुझिलो. नेक्स्ट क्वेश्चन आसा. क्वेश्चन बुझ टिके दया करिकी हैला. आसा 4000 रे आपण माने बैच जॉइन करिबे महाटा जोटा प्राइस होची 4000 किंतु मो कोड एसटीजी 10 यूज कला पर गोटे 10% डिस्काउंट पाइ परबे. जे कोनोसी बैच रे आपण माने मो कोड यूज करिबे 10% डिस्काउंट पाइबे. बाकी रहला मोर एंड मोर प्रैक्टिस करबा को एभला एमसीक्यूज आपण माने बेदाई क्यू आप एबे ही डाउनलोड करंतु. जल्दी जल्दी स्कैन कर गोटे मिनिट टाइम दोची डाउनलोड कर दियो. आसा नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर कोन अछि. In which physiographic subdivision of Odisha okay कौन हे गला तमने करो काहे के दुखियात्मा भले होउछ पाठ टिके पढु ना पढि के चाकरी करले कोन मते पैसाटा दे देबो की आसा in which physiographic subdivision of Odisha do you find the Jaipur Navranpur plateau, which is characterized by an average elevation of 300 to 600 meters above the sea level. जेते बेले आपन को कहूची जयपुर नवरंगपुर प्लेट्यू, देन कैन वी रिलेट विथ कोन जयपुर नवरंगपुर कोड को पने आसा सीधा त माने साउथ वेस्टर्न हिल रीजन को की साउथ वेस्टर्न को रिलेट करे परिबा. नॉर्थर्न प्लेट्यू कहले केउंझर कंपोज प्लेट्यू कहितली हां ना नहीं. चलो देखो कोन कहूची ना जयपुर नवरंग प्लेट्यू इज अ पार्ट ऑफ द साउथ वेस्टर्न हिल रीजन often characterized geographically alongside the larger central plateaus and eastern ghat highland zone सहित मिसे की कोन हेला. नेक्स्ट मते कहले देखी. सो हियर यू कैन गो विथ ए जो रेड मार्क हेची दिस इज द टोटल आपनकर कोन ना साउदर्न प्लेट्यू हम बोली ताको कहूची. ठीक अछि जेतरे आपनकर दंडकारण्य इकोसिस्टम पडुची ए पाखरे आपनकर गंजपति एपटे हेला दंडकारण्य इकोसिस्टम कलाहांडी कोरापुट हेला. द फेमस मलायगिरी पिक आपनकर केते रहउची मानस कोन हेला. ओके देखो कौन कहछि मते यार आंसर दियो. फर्स्ट द फेमस मलायगिरी पिक, द एलिवेशन इज ओनली 1187 मीटर. An important high point of the central structural hills of Odisha is located in which district? मलायगिरी कहला माने कोठी रिलेट करियो जल्दी कहि दियो. आसा कोठी रिलेट करियो जल्दी कोठी अनुगुल हैला. द फेमस मलायगिरी पिक गजट हिल्स ऑफ रेंज अनुगुल डिस्ट्रिक्ट रे पडुछ पाल्लहडा हैला. आसा व्हाट इज द geomorphological term used for the extensive sand dunes and ridges that characterize the coastal strip of Ganjam and Puri district. अच्छा Ganjam and Puri district को आमे को माने को according relate करि परिबा. Definitely जदि sand थिबो माने sand dunes कहूची माने sand speeds थिबो regular dunes थिबो. Some sand dunes we can find there. These are very dynamic and आमे कहि परिबा that is wind and waves sculpted, that means wind pai या फिर wave pai आपनकर form हे जाय थाय. Those dunes are found only in the Puri region, that means that is the Konark Puri region. Sand speeds and regular dams आपण माने पाई परिबे. क्लियर देखंतु नेक्स्ट मते कोंतु द महानदी रिवर एक्सपीरियंसेस. The Mahanadi River experiences an interesting structural shift near the Subarnapur, जोटा को हमें सोनपुर कहूचे, before the Tel River joins it. The main channel of the Mahanadi suddenly turns almost 90 degrees from its eastward course. What geological feature force this sharp directional alteration? कोथि पाई जो 90 डिग्री सडन आपनकर महानदी चेंज हे जायछि. एक्चुअली रीजन कोन आपनकर महानदी चेंज हेबार की मते कहि परिबो जल्दी को. सुकिंदा फर्स्ट जोन सहित रिलेट करियो बिल्कुल नहीं. सुकिंदा वैली जाजपुर. देन कहला द मेन बाउंड्री फॉल्ट हिची की बिल्कुल भी नहीं. ता माने कहि परिबा कि द नॉर्थ वेस्ट ट्रेंडिंग महानदी ग्रावेन फॉल्ट लाइन. ए ग्रावेन फॉल्ट लाइन गाइस कोन ए जो ग्रावेन फॉल्ट लाइन कहूची माने कोन गोटे डीप रिफ्ट वैली आपनकर माने कोन डिफॉल्ट हे कि सेठी फॉर्म हे जायछि. द डीप रिफ्ट वैली फॉल्ट सिस्टम दैट एक्ट एज अ स्ट्रक्चरल पाइप दैट माने कोन गोटे ए टाइप रो फॉर्म हे जायछि जोथि पय कि महानदी आसी कि पुणे एपट को बुली जायछि. माने एठी गोटे 90 डिग्री फॉर्म हे जायछि. सेटा कोथि पय रीजन कहूछु मन रखंतु. द नॉर्थ वेस्ट ट्रेंडिंग महानदी जोटा कि आपनकर कोन नॉर्थ वेस्ट को आपनकर जाउथला दैट वाज आपनकर टर्न हे जायछि. क्लियर एतिकी जिंसा मन रखबा. 90 डिग्री बेंड या तो सोनपुर आपनकर कोथि पय हेछि दैट इज बिकॉज ऑफ द
deep rift valley है ना देखो so महानदी ग्रावे that is because of what because of the deep rift valley पाई आपण कर इठी फॉर्म इज हियर एई कथा कहू जे एई जगह एक्जेक्टली एई जगह देखो है ना एई जगह रे आपण कर फॉर्म इज 90 डिग्री गोटे कोन ना क्रिएट करि देछि है ना एते जिंस मन रखियो त मन कर मन रहइबो मानस तमे जगतसिंहपुर की जाजपुर किछि बुझनी पाठ पढ मते को फाइल द सुवर्णरेखा रिवर इज फेमस फॉर इट्स इंडिपेंडेंट एस्टुअरी नाले किछि बुझाइबिनी क्वेश्चन पढिबो ऑप्शन ने टिक मा देई पढे तो माने बुझु ना मु जदी डिटेल बुझुछि एल्स मु काहे के दे चिल्लेबी टिक मार देकी पढिबी ना आसो why the Subarnarekha river is famous for its independent estuary okay it exhibits a unique drainage anomaly in Baleshwar which minor highly tidal distributary the creek splits from the Subarnarekha near the Bhogarai and runs parallel to the coast before forming its own independent swampy mouth ताको हमें कोठी कहबा दैट मींस द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द सुवर्णरेखा को रिवर को हमें रिलेट करे पारिबा मते कोन द कंसबांस जो रिवर आपनकर कहूची ये गोटे कोस्टल रिवर ओरिजिन हेची कोठू बालेश्वर सहित बे ऑफ बेंगली आपनकर डायरेक्टली मिस जायची कंसबांस रिवर आपनकर ओरिजिन हेची माने हमें कहि परिबा नीलगिरी रीजन बालेश्वर ओरिजिन हेची प्योरली इंडिपेंडेंट रिवर बे ऑफ बेंगल मर्ज हेची ये आपनकर कहा सहित कहार ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म भाई हे ता माने हमें कहा को रिलेट कर परिबा बालेश्वर ओरिजिन हेची मयूरभंज सहित सेपरेटली आपनकर जाईची ता माने कोन ना जालुका जलका रिवर जाको हमें कहूची जमीरा रिवर ना में जालुका रिवर ना जमीरा रिवर कोटा राइट आंसर ना 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 सॉरी जमीरा 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 ठीक अछि जे फॉर जालुका जे फॉर जमीरा भूले गेला हो राइट आंसर डी देइछ सब अरे वाह वाह मैडम कर डी भूल होला तो तामे कोन मैडम धरिबो ना हो ना सब भी बात देछ ना गधा सब द हाईली टाइडल क्रिक डिस्ट्रीब्यूटरी जे कि सुवर्णरेखा नियर बाहरी छी मार्सी भोगराई लोलैंड्स करिछि दैट इज द जमीरा रिवर मन रख ओके कोन मारतिलो सब मैडम जा कहले ना कि बालेश्वर ओरिजिन हेड की कोन मयूरभंज सहित जाईछि गधस्थल आसा सो जमीरा रिवर इज अ लेसर नोन टाइडल ब्रांच चैनल क्लोजली लिंक्ड विथ द सुवर्णरेखा डेल्टा रे फॉर्म इज आपनकर बट ये आपनकर एडजेसेंटली माने सुवर्णरेखा आपनकर एडी जाईछि हियर आपन माने कहि परिबे एई पाखा पाखा आपनकर जमीरा रिवर जाईछि एडजेसेंटली आपनकर माने पाखा पाखी हे आपनकर ये जाईछि है ना नेक्स्ट चलंतु मते कहि दियंतु अगेन द सिलेरु रिवर ओके कहिथिले ऑलरेडी आंध्र प्रदेश सहित रिलेट करैथिलो मते कहंतु द सिलेरु रिवर हो एबे ताहले जाना जदी जानि ना एबे जाना मते कहंतु कोन पचाछि क्वेश्चन ना पचाला सिलेरु रिवर पार्ट ऑफ द गोदावरी बेसिन इन मालकानगिरी undergoes a massive underground diversion for hydropower generation after leaving the Palimela reservoir through which specific hill range does the water passes via a head raised tunnel before dropping into the Poteru Valley powerhouse अच्छा पोटेरु कथा कहूची तमाने हम का रिलेट कर देबा जल्दी को मुझे आनी केही आंसर दे परिवनी केही अरे बाप रे समस्त आंसर दे देछ कोन करे गूगल कर देछ ओई चोरस्तल कोन करछ गूगल कर देछ ना जानि थिलो वेरी गुड आसा तो कोंडा कांबेरु हिल अपन करी ओरिजिन हेच कोडु कोंडा कांबेरु ओरिजिन हेची माउंटेन अपन कर पोटेरु रु कोन ना कोंडा कांबेरु हिल रेस पोटेरु अपन कर पोटेरु वैली पाखरे अपन कर ये अछि क्लियर दिस इज द ओरिजिन ए जो हिल अछि साइड ता भीतर कोडा कोडा अपन कर कोटा काबे क्लियर नेक्स्ट मते कहि दियंतु the geologist suggests that the Budhabalanga river displays an antecedent superimposed that is a drainage pattern which unique geological structural element does it cut directly through escapes the interior circular basin of Mayurbhanj Budhabalanga similpal ru bahari chi Mayurbhanj clear तो कहछि जो सर्कुलर फॉर्म आपनकर करिछि कि the concentric ring dike structure of the similpal complex आपनकर हबो काहे की हबो कारण दिस इज द एंशिएंट कोन ना वोल्केनिक स्ट्रक्चर आपनकर ये फॉर्म हेची जे कोटा रिंग शेप आपनकर नेछि जे कि आपनकर एठी देखो द similpal massive structurally and ancient nested volcanic machine surrounded by the concentric rings of quartz and proterozoic volcanics the Budhabalanga river has breached these hard structure तो जो तो फॉर्म हेची सेठी आपनकर कोन करछि ना गोटे रिंग शेप कोठी ना गोटे आपनकर रिंग शेप आपनकर नै जाईछि सेठी पानी के आपनकर दिस वन आपनकर फेमस हेछि एंड रिंग शेप रो आपनकर बाहरी हेछि कोन ना द हाईएस्ट वाटरफॉल कोन ना बरेही पानी हेलो नेक्स्ट चलो मते को व्हिच माइनर
highly torrential, okay, highly torrential right bank tributary of the Brahmani river originates in the high altitude hills of Deoghar, flows through dense structural valleys and it's famous for creating the majestic कौन ना प्रधानपट waterfall. क्वेश्चन कौन कहछि भूली जाओ, सिंपली पचाछि द सोर्स ऑफ द प्रधानपट waterfall. क्वेश्चन जेते लंबा दो थरे रीड करिकि ताकू बुझिबा को ट्राई करबो, एस आपण माने फसी जिवे. जेते बेले प्रधानपट waterfall कहबो मने रखंतु कोरा पानी स्ट्रीम कौन कहछि द पेरेनियल हिल टॉप, जोटा कि आपनकर प्रधानपट waterfall origin हेछि देवगढ़ रु, एटा आपनकर कोरा पानी स्ट्रीम. The Pradhanput waterfall near the Deoghar town is fed by the perennial कौन कोरा पानी stream रु आपनकर ये कौन ना Pradhanput waterfall form हेछि. Clear? Next मते को the Rusikulya river basin lacks a true deltaic network compared to the Mahanadi. Instead, its lower catchment features a unique hydrogeomorphic phenomenon where a network of paleo channels and seasonal branches choke up, forming which historic swampy backwater like wetland complex near the Ganjam town. सबु कथा भूली जाओ, क्वेश्चन पचाछि हाइड्रो जियोमॉर्फिक wetland of the Rusikulya river. क्लियरली मते जल्दी जल्दी आंसर कहि दियो कोन हे जीवो. मु जानथि सब बुलबाल मारी पंचायत कहछि माने संगे संगे टांपरा त मानकु देखाउथुवा, अंशुपाता कटक रे एकु एलिमिनेट कर दोथुवा, टांपरा देखाउतो भीतर कनिका त केंद्रापटा रे कालू केनाल आइछि हिस्टोरिक मैसेज. एरा त माने कोन जानि नथिबो, एरा त माने कोन जानि नथिबो, राइट ना नहीं. पचारिछि आपनकर ऋषिकुल्या ब्रांचेस करिछि, एठे ओल्ड कथा पचारिछि. टांपरा इज नॉट ओल्ड एट ऑल, टांपरा इज नॉट ओल्ड एट ऑल हैला. साउदर्न वेटलैंड ऑफ द चिलिका आपनकर पालूर केनाल हबो. राइट आंसर आपनकर कोन, while Tampara is a freshwater lake nearby, the old mount and the paleo channels of the Rusikulya are hydraulically linked to the Palur Canal, okay, and it's a tidal mass strip which run parallel to the coastal dunes and connect korichi kono na southern edge of the Chilika को connect korichi. Clear? Clear? तम घर पाखरे रॉयल श्रीराम किंतु तमे आंसर देई न ठीक ठाक भूल भाल आंसर देई दीछो. एठी देखि परिबो कोड वाला पालूर, हियर यू कैन गो. देखो एटा होछ हमर चिलिका लेक, ठीक अछि. एठी आपन देखंतु कलर चेंज कर दोछि न त मानको देखा छिबो. ए जो पालूर अछि एटा एई चैनल एठु देखंतु ओशियन सहित माने चिलिका लेक रु गोटे सरू सरू रास्ता देई कि आपनकर बे ऑफ बंगाल सहित कनेक्ट करछि. एटा को हमर पालूर केनाल बोली कहछि हैला, पालूर केनाल हैला. जेमिति आपनकर को केनाल महानदी सहित अंशुपाल लेक को कोन काबुला नाला कनेक्ट करछि, ठीक सेमिति काबुला नाला काबुला केनाल, ओके. एटा आपनकर पालूर केनाल कोन करछि ना आपनकर ओल्डेस्ट वन ताको आपनकर कनेक्ट करछि चिलिका को बे ऑफ बंगाल सहित. क्लियर? हां पालूर पोर्ट भी अछि. नेक्स्ट को the Baitharani river behaves unusually in its middle course near Jajpur. It breaks into an intricate loop system creating a massive seasonally flooded riverine island known historically as Viraja Kshetra of the na Asurabandha patch, which secondary branch shoots off from the Baitharani here to form a delta split. Okay, जदि हमें कहूचे the Baitharani river विषय आपन को सिंपली कोन पचारि छै आपन को कोंतु ता सेकंड ब्रांच ऑफ द Baitharani river to the Jajpur. को रिवर आपन माने जानसन बुढ़ा रिवर सुनि नथिबा गेंगुटी नुह खरसुआ और कानी कोन कहि परिबो. अरे बा डी मरा होछि डी मरा होछि ना कि पटनाय कोटा गोटे मैडम हम तो सुनिनु किछि ना गुडा कोटा गोटे मार देले हबो. सो राइट आंसर आपनकर कोन ना कानी रिवर आपनकर हबो. विराजा क्षेत्र पाखरे आपनकर कानी रिवर हैला. तो कानी रिवर जा भी कहि परिबो. कोई रिवर is a major highly active distributary loop of the Baitharani river in the Jajpur Bhadrak border region ये पड़ुछ हैला. next jiba हैला. मते कोंदो again the in the southwestern tableland the Indravati river, this is a major tributary of the Godavari, flows across Navaranpur and Kalahandi. A massive cross basin water diversion project transfer hechi water out of the Indravati basin into which Mahanadi tributary basin is the water mechanically diverted via the Mukhigunda powerhouse. पचारिछि ए जो इंद्रावती एंड आपनकर कोन ना जे कि गोदावरी रो गोटे बेस माने ट्रिब्यूटरी पचारिछि इंद्रावती बेसिन डाइवर्सन करिछि फ्रॉम द इंद्रावती रिवर. तो को रिवर आपनकर अगेन जाई कि महानदी रो गोटे ट्रिब्यूटरी ता पाखरे कोन तेल रिवर बेसिन अछि कि जहा को हमर आउ कोन को छै ना हाथी रिवर बोली को छै ताको हमें तेल रिवर और ताको हमें आउ कोन ना हाथी रिवर कहि परिबा कि. क्वेश्चन पचारिछि द प्रोजेक्ट दैट ड्रॉप्स the water down to the
वेस्टर्न घाट कोन ना आपनकर को रिवर को जे कि अगेन जाई कि आपनकर कोन करिछि ना मुखीगुड़ा पावर हाउस को पानी सप्लाई करूची एंड सेही रिवर अगेन आपनकर महानदी रे गोटे कोन ना डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी सॉरी डिस्ट्रीब्यूटरी तो नहीं पजाटी ट्रिब्यूटरी हां ट्रिब्यूटरी बसिन हिच दैट इज द तेल रिवर और ताकू हाथी रिवर बोली भी लोकली कहसे क्लियर एति की जिंस ऑप्शन बी राइट नेक्स्ट मते कह दियो ना द बंशधरा रिवर व्हिच ओरिजिनेट्स इन द थुआमुला रामपुर हिल्स ऑफ कलाहांडी flows through a narrow structurally controlled linear valley. This linear force is detected by which dominant structural feature of the eastern ghat? एटा राइट आंसर कौन हबो जल्दी कौन हबो राइट आंसर लिसु राका ओडिया बैकपैकर जल्दी आंसर दियो कौन कहउछ राइट आंसर क्विकली दियो आंसर एठी वंशधरा कौन कहिछि ना डिक्टेट करिछि ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश सहित वंशधरा को चूज करिवो वंशधरा एंड नागावली रिवर बोथ फ्लो थ्रू द डिस्ट्रिक्ट डीप स्टेट पैरेलल स्ट्रक्चरल कोन ना लिनियमेंट सहित नेक्स्ट मते कोंतु ना द समाकोई रिवर ना तो सुनी नथिबो फिर भी देखिए ट्राई कला आंसर दबो कारण सब बेले आपन को ओडिसा रे पढुचंदी माने टिप्रे जाकी टिके रिसर्च करिया पड़िबो कारण कोउठु पचार दबो क्वेश्चन त माने जान नथिबो गा माने हम डिस्ट्रिक्ट पढुचे विलेज भी पढुचे केते बेले ब्लॉक भी पचार दबो अपन माने ऊपर को नथिबो सेति लागि मो ब्लॉक भी पढाए तो कोन मते द समाकोई रिवर इज अ हाईली क्रुशियल perennial left bank tributary that feeds one of Odisha's largest multi-purpose reservoirs. Which river system does the Samakoi belongs to? Samakoi ना आगु सुनिथिलो सप्त कहइबो महानदी हीराकुद रे समकोई सहित रिलेशन केबे सुनि नथिबो बैतरणी कोला सुनना किंतु ये होची आपनकर कहार ना ब्राह्मणी रो समकोई कोल कोई एडा सुनिथिबो त माने कोयल सहित रिलेट कर दबो कोन शंख एंड कोयल सहित सो दिस इज द नॉर्दर्न पेरिनियल ट्रिब्यूटरी जे कि डायरेक्टली ब्राह्मणी सहित जाई कि मिसी कि आपनकर रेंगाली डैम फॉर्म कर कोची बिफोर फॉर्मिंग द रेंगाली डैम आपनकर ब्राह्मणी सहित ये मर्जर हिच So, Samakoi River is a major northern tributary that drains the rock hill of the southern Keonjhar and northern Anupur, emptying directly into the Brahmani River right at the headwaters of the massive Rengali Reserve. Clear एतिकी जिंसा? Next question कौन कहछि देखो आ पांचटा व्यस्त होने पांचटा क्वेश्चन हैला कौन कहछि that the lower Suptel irrigation project a major dam recently completed to address the chronic water scarcity in western Odisha is constructed across the Suptel river. The Suptel is a direct tributary of which major river system? Suptel कहूची माने आपण माने जानसंती कहार तेल Suptel तेल होची महानदी हने नै मते कोन सो Suptel तेल ये सब आपनकर सोनपुर पाखरे Suptel आपनकर कोन तेल रिवर महानदी तेल रिवर आपनकर का सहित मिसिची महानदी सहित को जगह रे सोनपुर सहित क्लियर एतिकी जिंस चलो तेल रिवर आपनकर Suptel सोनपुर थारे एठी आपनकर कोन मर्ज हेची ना ओंग रिवर एठी भी जाईची तेल रिवर एमाने मिसी कि महानदी को पानी देइछंदी क्लियर नेक्स्ट चलो मते कोदा मंदिरा डैम कोडी को नदी ऊपर शंख नदी ऊपर हैला पते जे मंदिरा डैम व्हिच प्रोवाइड्स वाइटल वाटर सप्लाई टू द राउरकेला आसो सरियला तो आपण इछि अछि किछि अछि कि कोन पचारिछि को नदी ऊपर शंख नदी ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन केबे हां छुआ एटा मन रख कंप्लीट केबे हेतला मंदिरा डैम 1959 एटा कंप्लीटेड हेतला एटा मन रख 24 किलोमीटर कोन राउरकेला ठु आपनकर यार डिस्टेंस पडुछि हैला इयरटा इंपोर्टेंट छुआ केतेबेले पचारि दबो को ऊपर को नैथिबो आमे त खाली हीराकुद गोसी के आइछु हैला नेक्स्ट को द कानपुर लैंड इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैसिव कंक्रीट ग्रेविटी डैम across the Boitarani river to irrigate mining heavy wells in which specific subdivision block of the Keonjhar district in this engineering landmark bill तो को जगह रे आपण करिए होउची मते की कहि परिबो कानपुर लैंड इरिगेशन प्रोजेक्ट सब बळे जल्दी कोठी ना बोइतरानी रिवर ऊपर वासुदेवपुर चंपुआ ठारे को जगह रे होउची छुआ सी किए कहिला से धरि काइला से किए रे अनन्या तमे एमिति भूल करछो ना ये आउ की अनन्या रे भाई अननी ना अनन्या रे भौणी अननी हैला सो कानपुर लैंड इरिगेशन प्रोजेक्ट आपनकर बैतरणी वासुदेवपुर आपनकर कोठी चंपुआ सब डिवीजन रे होछि मते को फाइल द मेन हिराकुद डैम इज फेमस ग्लोबली इट इज फ्लैंक्ड बाय टू मैसिव earthen dikes that lock the reservoir into the surrounding hills whereas the names of the geographical position of these two critical dikes आपनकर जो हिराकुद डैम फेमस अछि तार दीटा डाइक रो ना आपन गुडी पछे जोटा कि एग्जाम रे
गोटे थर पचाइथिला ओसीएस एग्जाम रे तो तुम माने यार आंसर देइथा कारण दिस इज अ वेरी न्यू क्वेश्चन एंड अपन मानको भल लागियो जल्दी कोन हमर राइट आंसर फुल फल मारिबो जदी भूलभाल मारिबो जदी टेकी की कुछ कर परबिनी मु तो मानको टेकी परबिनी चलो मु जान जे सब भूलभाल मारिबो फिर भी दियो ट्राई करो लक्ष्मी डुंगरी डाइक आउ गोटे होची चंद्र डुंगरी डाइक कोन लक्ष्मी आउ चंद्र दीटा मन रख ना the to contain the massive water of the Hirakud reservoir two structural earthen dikes were built the left dike ro na hochi apanakar Lakshmi Dungri hill right dike ro na hochi Chandra Dungri kono dike Lakshmi Dungri Chandra Dungri L for left L for kono Lakshmi Dungri बाकी आरोटा आपनकर कोन सीटा होची राइट बाय डिफॉल्ट चेंज कर दबो हैला बाय डिफॉल्ट चेंज कर दबो नेक्स्ट the upper Kolar hydroelectric project utilizes a unique natural drop in geography. The main reservoir dam is locked near the Jaipur, but the powerhouse is locked far down at escarpment at Mukhiguda. Where does the water go after discharging from the turbines? Question बुझी पाचो ना नहीं? पचारिला the water discharge of the upper Kolar project to where? को जगह को discharge है कि से upper Kolar project to जाए? Answer मते दियो. कौन कहची? कहला the upper Kolar hydroelectric project utilize a unique natural drop in the geography. Okay, uniquely तारा इटा natural system है. The main reservoir dam is located near the Jaipur, but the powerhouse is located far down the escarpment. बहुत तळे अछि ता माने मुखीगुडा ठीक ए पानीटा जाउची कोठी जाउची ना into the शक्तिगुडा reservoir जेटा कमे कहउची कोन पोटेरु बसीन. Very good, D option. D हैला right answer. कोन ना शक्तिगुडा हमें ताकू पोटेरु बसीन बोली कहउची. एतकी जिंस क्लियर. गुड मॉर्निंग हैला तमरा एठी आसो. The water from the upper Kolar reservoir passes through the tunnel system to generate power and its thin discharge into the Shaktigura Dam reservoir where it feeds the extensive Poteru irrigation canal network in the Malkangiri Dam. एतिकी जिंस क्लियर हैला तमनकर. So again कहउची महापात्र प्राइस 4000 rupees. जो माने मो कोड SPZ 10 यूज करिवो 10% डिस्काउंट पाई परबो ओवर इन बैचेस. जदि ए पर्यंत चैनल को माने वेद आईक्यू ऐप्स को डाउनलोड करना जोथरे क्लास रो पीडीएफ तो माने पाइबो ता सहित प्रैक्टिस भी करि परिबो डेली बेसिस रे मॉक टेस्ट देई परिबो निजर स्कोर निजर स्ट्रेंथ जानि परिबो. दैट इज द वन एंड ओनली डेस्टिनेशन ऑफ योर्स इज द वेद आईक्यू ऐप डाउनलोड राइट अवे. ओके एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिछि कि तमे माने गोटे मिनिट टेलीग्राम चैनल सब जॉइन करिनो तुम टेलीग्राम आनिनी तो काली रो जो माने क्लास रा आंसर देइथिला फर्स्ट थिंग त माने को डिक्लेयर कर दोउची 70% डिस्काउंट फ्री तो कर देबी और डिस्काउंट काई देबी. पांचटा क्वेश्चन आज रो अछि जोटा कि कमेंट सेक्शन को मते जणाइबो आ कहि दोउची काली जो मिस्टेक करछ सेटा करिवनी सिंपली मते लिखि दबो नंबर सपोज 35 ते नैची 36A 37B 38C 39D henceforth मु आंसर चेक करिवि तमे माने लिखि कि दबो बिकॉज़ तमे जो वे रे लिखि दोछ मु कंफ्यूज होछि. ओके एंड जनकर ना कहिबाटा डिफिकल्ट हो जाउची कारण की सी दोछ त की दोछ चंद्र के बुझी पाछो तो ऑप्शन ना लिखिया दरकार नहीं खाली एबीसीडी मते लिखि कि दियो देन डेफिनेटली आई विल कोन मो बारी आज कंफ्यूज हे गेली त मानकर मेसेज पढी इरिटेट भी हेगा तो से अकॉर्डिंग आंसर दबो. तो अगेन काली रो आंसर आपण माने कहि दोची 41 नंबर थिला सी मु पठै देबी ग्रुप रे पठै देबी तमन देखि दो. ओके तो आज रो क्वेश्चन देखि दियंतु आंसर राइट अवे कमेंट सेक्शन में जे फास्ट दबो क्लास वाला पर मु फास्ट तारो चेक करी के आंसर कोन स्क्रीनशॉट नेबी. The Pitamahal Dam is a unique medium irrigation project built to regulate flash floods and store water for industrial urban corridors in northern Odisha. Across Swiss minor tributary of the Brahmani River, it is built. Koti kahibo. Then kachi the Balimani Reservoir Malkangiri is a massive joint venture hydrographic layout. It is structurally backed by Arch Rockfield Dam built across Swiss River, which is historically infamous for separating the Swabhiman and Anchal, that is a cut-off area from the mainland Odisha. Kota have a right answer. Next, the Kala Dam is a lesser known but highly vital reservoir project located in the northern ecozone of Odisha. It forms part of the Subarnarekha Budhapadanga Basin Management Plan and is located in which district? The Rengali Dam is the second largest multi-purpose dam project in Odisha after Mahanadi. Okay, structurally it is a concrete gravity dam built across the deep ground, which specifically geological hills does the dam lock into. जो dam टा अपन को जो hill ऊपर अछि से hill ना कोन मते जल्दी को मते को the dams and Jhumka dams Bhubaneswar अछि ना को the dams are minor but highly crucial reservoir system act as
वाटर बफर्स एंड इकोलॉजिकल सैंक्चुरीज को जगह रे अछि आपण माने जानछन कपिलास त नुह ढेंकानाल ले भरतपुर रे अछि ना बारबरा फॉरेस्ट रे अछि कोठी अछि मते को तो यार आंसर मते संगे संग कमेंट सेक्शन में क्लास एंड पर दबो एबे ट्राई कर भी देई परिबो ना तो नेक्स्ट क्लास तो मान कर डिक्लेयर करबी की रहि छी विनर विनर चिकन डिनर ओके आसा तो अगेन कहूँ वेद आईक्यू ऐप को संगे संग स्कैन करके डाउनलोड करो बैच लेवाक चाहूँ मो कोड SPZ10 यूज करो 10% डिस्काउंट जोटे पाइजिबो आई होप आज क्लास आपण मानक इंटरेस्टिंग लागी फ्रुटफुल हेजी जदी हेजी जो माने नुआ स्टूडेंट्स अछंती आफ्टर दैट जो माने क्लास भी देखुचंती सब्सक्राइब करिनबो चैनल को जो माने एबे भी अच्छा सब्सक्राइब करिनो सब्सक्राइब करनबो एंड लाइक करबा को त हम कहि भी पारु तंटी फाटी जाउची त माने को लाइक करिया लागि कहिबा लागि तो जदी भल लागी डेफिनेटली लाइक करन थैंक यू सो मच अरे भाई ये तंटी काटलानी एते बाटा पढ़े पढ़े स्टार्टिंग रु कहबा मु गाई देबी मझी रे कहबा गाई देबी एंड बेले कुहनी ना तंटी खाली आ आ कहूची कहजी मैडम प्लीज टिके क्लास ऑफ करंतु टिके वार्म वाटर नियंतु और प्लीज आराम से सोई जा बिलीव करो प्लीज एंड आज दिनडा एक्सेस हेक्टिक ऑफ माय लाइफ कहि पारे द मोस्ट हेक्टिक डे ऑफ माय लाइफ इज द 23rd of July 2026 कहबो मते परे और 5-7 वर्ष परे मैम आपण ए दिन कहिथिले आज ही से दिन सती लागि मते टिके रेस्ट दरकार प्लीज ओके हेलो थैंक यू सो मच गाइस बाय बाय टेक केयर